everyone, welcome back to my YouTube channel. Sin parar, shake your body, shine like star. How are you doing all today? मेरी ये सेकेंड वीडियो मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोगों को पसंद आएगी. I really got good comments and it really pushed me to make another video. And I hope it keep pushing me to make many more videos. Today it will be a more informative video. So I will be recommending you guys these 3 books which actually changed my life. It just didn't happen overnight. I took baby steps. These books are really simple and इसमें कुछ hard and fast English नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा. So let's just get into the video. And जो भी मैं यहाँ बताने वाली हूँ ना, it has been first applied and then it has been recommended to you guys. So I think this is gonna change for you guys also. अगर मैं कर सकती हूँ अपनी life change, तो I think सब कर सकते हैं. So the very first book that I have is This Is How You Heal. It is from Brianna. मैंने ये 3 साल पहले ली थी and since I have read this book, मैंने काफ़ी लोगों को ये recommend करी थी and trust me, people loved it. If your heart feels really heavy and your mind feels really stuck, this book might be the one for you that will give you a breakthrough in your life. And if you really want to have a perspective towards why you feel what you feel and how you want to change and how you want to heal from those things that has been happened to you, each chapter, feels like that the author is really talking right to your soul. It's whenever you feel very lost and whenever you feel like लाइफ में बहुत हैवी लग रहा है यार, मतलब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एंड यू डोंट नो हाउ टू कोप अप विद इट, जस्ट ओपन दिस बुक and this will just guide you towards everything. What I have learned in my life that we really heal from those things by sitting with those emotions, by sitting with those feelings with us and not by running away. Usually what we do is like कुछ भी हमें अगर बुरा लगा है ना, हम मोस्टली क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं वो फीलिंग्स, राइट. सपोजिंग किसी ने हमें हर्ट किया है एंड वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट फीलिंग. हमारा कभी भी एक ऐसा रोल नहीं होता है कि हम बस उस फीलिंग के साथ बैठे हुए हैं, जस्ट फीलिंग है दैट ओके वी आर हर्ट, वी वांट टू गेट रिड ऑफ दोज फीलिंग्स in just like a minute or in just like half an hour or maybe in just a day. If you don't allow your feelings to feel, there's no way to heal from that. So the people who have been going through a emotional pain, heartbreak, trauma, or maybe just feeling lost in life, this is the mirror you don't even know that you need. And this book helped me to stop blaming myself for my past and start understanding why I reacted the way I reacted. So the next book that I have is The Art of Being Alone. So for somebody who is scared of being alone, who is scared of being just by yourself, this book is actually gonna help you to fall in love with yourself. This one is really close to my heart. I found it when I really needed it. It is really a life-changing book. तुम्हें समझ आएगा अपने बारे में बहुत, तुम्हें अच्छा लगेगा कि यार अपनी चीज़ों को जानने में, अपने आप को जानने में इतना इंटरेस्ट आएगा. We often really think being alone means being lonely, but this book have actually shifted the idea of everything related to that कि अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, अकेले अपने आप को enjoy करने में, अपनी आप की कंपनी enjoy करने में कोई बुराई नहीं है. जिस दिन आप अपने आप को समझ लेते हो ना, जिस दिन you think that you just know yourself, you just know what your worth is, you just know who you should be allowing yourself to talk to, जब आपको पता है ना कि आप अपने लिए काफ़ी हो, ये बुक है जो आपको रियलाइज़ करेगी दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. मैंने ये बुक पढ़ी थी, उसके थोड़े मंथ्स बाद ही मैंने ये टैटू कराया था विच सेज दैट आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ. एंड आई थिंक दिस इज़ रियली गोना शिफ्ट योर होल नैरेटिव. आई थिंक सॉलिट्यूड रियली टीचेज यू हाउ पावरफुल यू आर. इट्स नॉट दैट कि आप दुनिया से एकदम कनेक्टिविटी तोड़ रहे हो, जस्ट दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ मोर. इतनी भाग दौड़ी के बीच में we really never ever try to connect with ourselves, and this book really helps a lot. After reading this book, I started enjoying my own peace. I really started enjoying my own company. Started doing little things by myself, like going for a coffee date alone, or maybe going for a shopping alone, or maybe just doing everything alone, which a person really wants somebody to do those things with somebody, but you can do that alone and that is completely fine. Since I've started doing it, changed my life. And जब मुझे कहीं जाना होता है, ऐसा नहीं कि मुझे किसी की नीड नहीं है लाइफ में, but it's just that I am also enough for me, I know that, and I am enough for going out by myself. And that moment I'm just completely happy with myself. I'm completely in peace, and that's the most beautiful part about this book, that it makes you realize how
powerful you are alone, and that is something that nobody can ever take from you, your own solitude, your own company, your own love for yourself, कि आप अकेले भी इतना enjoy कर सकते हो यार। मतलब आपको नहीं चाहिए constantly कोई भी 24 घंटे आपके पास कि आपको इंजॉय करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ रही है। यू आर इनफ बाय योरसेल्फ एंड कम्प्लीटली फाइन। स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लोगे, वन डे यू वुड नॉट इवन रियलाइज एंड आपको लगेगा ओह शिट यार, आई रियली डोंट नीड एनीबॉडी, आई एम सो हैप्पी बाय माई सेल्फ, आई एम सो हैप्पी बाय माई सेल्फ, enjoying my own life, dancing in my room alone, and that's what happiness is. Next up I have is Good Vibes, Good Life. Book basically talk about self-love and self-acceptance. Self-love for me, I think in a lot of years that I've understood is making boundaries, healing from those things that has been hurt in your past and that has been done in your past, not being victimizing yourself, actually working on yourself. Those greatest form of self-love, one of those one factor of self-love. Your thoughts actually shapes your reality. Whatever you will be consuming, whatever you will be taking from other people, it could be negative, it could be positive, कुछ भी हो सकता है. Depends on you what you're gonna take and what you how you're gonna imply in your life. जो भी आप देखोगे, जो भी आप सुनोगे, जो भी आप चाहोगे, वो सब आपके थॉट्स पे होता है, एंड whatever your thoughts would be, वैसी आपकी रियलिटी शेप होती है. By reading this book, what has been changed in me is that I have stopped talking about myself in a negative way. I have stopped टॉकिंग डाउन टू माई सेल्फ. मैं कभी भी अपने आप को कुछ भी बुरा नहीं बोलती, ना ही किसी के सामने, ना ही अपने साथ. फॉर मी मिरर सेल्फ टॉक रियली वर्क्स, कि आप मिरर के सामने जाके बस खड़े हो जाओ और अपने आप को देखो और अपने आप को अच्छा अच्छा बोलो, नेगेटिव मत बोलो. अगर कुछ लाइफ में नहीं भी हो रहा है ना अच्छा, तब भी मैं बोलूँगी कि अच्छा ही बोलो, कि यार ठीक है अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से करते हैं. आई लुक इन टू माई सेल्फ दैट what didn't really worked out for me this time, what चीज़ को बेटर कैसे बना सकती हूँ, बाद में और क्या अपने आप पे इम्प्रूव कर सकती हूँ. कि लोग तो तुम्हारे लिए कुछ भी बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टेंट. Nobody is ever gonna praise you that much as you can praise yourself. That's the truth of life. Like वो सच है, वो रियलिटी है. आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, आपसे वो चीज़ होगी या नहीं होगी. So stop listening to those people and start listening to your inner self and start believing in yourself. Always surround yourself with people who really lift yourself. आपको बहुत कम लोग ही ज़रूरत होते हैं लाइफ में, चाहे वो एक या दो भी हो या फिर एक भी इंसान हो, वो जो आपको लिफ्ट करे. लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ तो चलने नहीं वाली, ये चीज़ तो तुमसे होगी नहीं, बट नो, यू डोंट हैव टू लिसन टू दोज पीपल. आपसे ज़्यादा आप में कोई बिलीव नहीं कर सकता. दैट कुड बी नोबडी, दैट इज़ जस्ट यू. जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, डू नॉट थिंक कि ये ऐसी बोल रही है. आई वॉज वन ऑफ दोज किड हु डिडंट न्यू व्हाट टू डू विद हर लाइफ. I failed a lot of times in school, in college, in life in general, and here I am. I am really doing good in my life. मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना सब कुछ कर लूँगी. I started believing in myself a lot. Confident Harshika happens to be after a lot of changes that I've done. अपने आप को किसी से ज़्यादा और किसी से कम मत समझो. आप जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो, और जो भी है बहुत अच्छा है. Every book that I'm recommending is life changing. You can go and buy it and let me know if you really want to watch such thoughtful videos. Just know that I've just put out my heart there and heal my heart. It will be healing your heart as well. Go and grab a book, grab a coffee and go read a chapter of any book that I have recommended and बाकी बताना कि कैसा लगा. If you really like this video, please hit the subscribe button and share with your friends and family.